जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता अथाष्टाविंशोऽध्यायः। ऋषय ऊचु देवीं समादधानेन देवेनेदमकीमृतम् अग्निशोमात्मकं विश्वं वागर्थात्मकिमित्यपि आज्ञैकसारमैश्वर्य आज्ञात्वमिति चोदितं तदिदं श्रोतुमिच्छामो यथावदनुपूर्वश। वायुवाच अग्निरिच्युच्यते रौद्री घोराया तेजसी तनु सोमः शाक्तोऽमृतमयः शक्ते शान्तिकरी तनु अमृतं प्रतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयं भूतसूक्ष्मेषु सर्वेषु त एव रसतेजसी द्विविधा तेजसो वृत्ति सूर्यात्मा चानलात्मिका तथैव रसवृत्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका विद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रस तजो रस विभेदैस्तु धृतमेतच्चराचरम् अग्नेरमृतनिष्पत्तिर्मृतेनाग्निरेधते अत एव हि विक्रान्तम् अग्निशोमं जगद्वितं हविषेशस्य सम्पत्तिर्वृष्टिसस्याभिवृद्धये वृष्टिरेव हविस्तस्माद् ग्रीष्मोमधृतं जगत् अग्निरुत्वं ज्वलत्येष यावत् सौम्यं परामृतं यावदग्रयास्पदं सौम्यमृतं च स्रव्यतद् अत एव हि कालाग्निरतस्ताच्छतिरुर्ध्वत यावदादहनं चोर्ध्वं दश्वाप्लावनं भवेत् आधारशक्त्यैव द्रुतः कालाग्निरयमूर्ध्वग तथैव निम्नग सोम शिवशक्तिपदास्पद शिवश्चोर्ध्वमधशक्तिर्ऊर्ध्वं शक्तिधर शिव तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन असकृच्चाग्निना दग्धं जगदद्रश्मसाकृतम् अग्निवीर्यमिदं चाहुस्तद्वियं भस्मयत्तत यश्चैत्थं भस्मसाद्रावं ज्ञात्वा स्नाति च भस्मना अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रेण बुद्धपाशात् प्रमुच्यते अग्निवीर्य तु यद्रश्म सोमेनाप्लावितं पुनः अयोगयुक्त्या प्रकृतेर्धिकाराय कल्पते योगयुक्त्या तु तद्दस्म प्लाव्यमानं समन्तत शाक्तेनामृतवर्षेण चाधिरान्निवर्तयेत् अतो मृत्युञ्जयायेत्थं मृतप्लावनं सदा शिवशक्त्यमृतस्पर्शे लब्धं येन कृतो मृति यो वेद दहनं गुह्यं प्लावनं च यथोदितम् अग्निशोमपदं हित्वा न स भूयोऽभिजायते शिवाग्निना तनुं दग्ध्वा शक्तिसौम्यामृतेन य प्लावयेद्यो गमार्गेण सोमृतत्वाय कल्पते हृदय कृत्वेमर्थं वैदेवेन समुदाहतम् अग्निशोमात्मकं विश्वं जगदित्यनुरूपत। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वभागे भस्मतत्त्ववर्णनं नामाष्टविंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।